Assalamualaikum ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of KP's vlog. Today's episode is hopefully going to be very entertaining, very exciting and very informative for you all. क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो है गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशल एपिसोड और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे दो बहुत स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे. एक गेस्ट तो हमें वर्चुअली ज्वाइन करेंगे जो कि बेसिकली अमेरिकन है लेकिन वो आजकल पाकिस्तान आए हुए. ही इज़ ट्रैवलिंग हियर इन पाकिस्तान. तो हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे. हम उनसे पूछेंगे कि उनका जो ये सफ़र JB में वो ट्रैवल करें गिलगित बल्तिस्तान में वो कैसा जा रहा है और इसी हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे. इसके अलावा जो गेस्ट हमें इन पर्सन ज्वाइन करेंगी वो पेशावर की पहली व्लॉगर और यूट्यूबर हैं. तो उनसे हम उनकी भी जर्नी के बारे में पूछेंगे. हम उनसे पूछेंगे कि उनकी मतलब जो उन्हें यूट्यूब की करियर ज्वाइन किया है, हाउ इज़ दैट फॉर द यूथ दीज डेज़. हम उनसे मनी मेकिंग के बारे में पूछेंगे, अर्निंग थ्रू यूट्यूब. वी आर गोना टॉक अबाउट वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक विद अस. तो ख़वातीन हज़रात, इसकी तरफ और गेस्ट की तरफ जाने से पहले जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है आपस में कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, आप लोग को कुछ सिखाऊं या कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो उसकी तरफ हम चलते हैं. लेकिन सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक ऑल दोज जो कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं एंड हु अप्रिशिएट द वर्क दैट आई एम डूइंग, और वो लोग जो मुझे फ़ीडबैक भी देते हैं मेरे एपिसोड्स पे. इसी तरह आप लोग फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि आई नो वेयर आई हैव टू इम्प्रूव एंड आई नो व्हाट यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. तो हम आते हैं आज की जो हमारी जो थीम है उसकी तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ. तो हमारी जो डिस्कशन है इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड गिलगित बल्तिस्तान. मेरी अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम सोनिया, वो भी गिलगित की हैं. तो देयर सो मच दैट आई हैव हर्ड अबाउट इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उस खूबसूरत जगह पे जाऊँ, वहाँ की खूबसूरती देखूँ, वहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस को एक्सपीरियंस कर सकूँ. तो ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान का जो कल्चर है, का जो ट्रेडिशंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है. हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे विद ग्रोइंग टाइम्स, एज वे मॉडर्नाइजिंग, एज वे गेटिंग एजुकेटेड, तो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि हम लोग अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ गए. हम लोग अपनी लैंग्वेज को उस तरह नहीं प्रिजर्व करें. और ये मैं तमाम यूथ के लिए कहूँगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे खुद बचपन से यही हमें बताया जाता है कि इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दो, उर्दू के बारे में इतना नहीं कहा जाता. तो हम जस्ट लाइक आई स्ट्रगल स्पीकिंग इन उर्दू फ्लुएंटली. तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक K2 चैनल कि उन्होंने फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ और मैं सीखूँ, उर्दू को भी सीखूँ और उर्दू में बातचीत करना भी सीखूँ. सो आई होप आई विल इम्प्रूव विद टाइम. तो एक और चीज़ विच आई रियली एडमायर अबाउट गिलगित बल्तिस्तान इज़ दैट इट इज़ होम टू डाइवर्सिफाइड कल्चर. और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वहाँ और लोग बहुत सारे मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं. जहाँ तक हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन देयर, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 4 मेन लैंग्वेजेस जिनके नाम मैं प्रोनाउंस करने में मुझे मुश्किल होती है. तो एक लैंग्वेज तो उनकी ख्वार भी बोली जाती है, विच इज़ एक्चुअली अ चित्राली लैंग्वेज, बट स्पोकन a large group of people they speak that language. और मुझे थोड़ी बहुत आती भी है, और वो इसलिए भी है because I'm generally very fascinated by languages. If I meet someone from a very different background, I know that I have to learn something from that person. उनकी language में मैंने कुछ सीखना है, तो मुझे इसीलिए थोड़ी बहुत ख्वार भी आती है. I know a little bit of Turkish, a little bit of Romanian, I know a little bit of Pashto because my maternal family is basically Pathan. तो गिलगित की जहाँ तक बात की जाती है, जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, ये कहा गया है कि पाकिस्तान में अराउंड 500,000 टूरिस्ट विज़िट करते हैं एनुअली, जिसमें मेजॉरिटी लोग प्रेफर करते हैं कि वो नेचुरल ब्यूटी को देखें पाकिस्तान की. और जब हम नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं तो हमारे जहन में यही नाम आते हैं. गिलगित हो गया, चित्राल हो गया, हुंजा हो गया जो कि वहाँ ही है, तो नारान का खान हो गया, इस टाइप की एरियाज़. एंड देन देयर फ्यू नंबर ऑफ़ पीपल हु प्रेफर सीइंग द हिस्टोरिकल साइड, जिसमें तख्तबाई हमारी साइड होगी, जिसमें हमारे पास इंडस वाले सिविलाइजेशन की जो कुछ सिटीज़ रह गई थी, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वो जगह विज़िट करना प्रेफर करते हैं. तो हम लोग, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैं ख़ुद तो गिलगित नहीं गई, बट इट्स डेफिनेटली ऑन माई ट्रैवल लिस्ट एंड आई डेफिनेटली लव टू विज़िट एंड आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. तो मैंने कुछ फेमस जगहों को हाईलाइट किया जो कि मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट गिलगित एनी टाइम सून, देन यू शुड डेफिनेटली विज़िट दीज प्लेसेस बिकॉज आई वुड डेफिनेटली डू दैट. तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है गिलगित ब्रिज. और ये गिलगित ब्रिज का कहा जाता है कि गिलगित की जो ट्रेडिशनल बाज़ार है, बाय द एंड ऑफ दैट बाज़ार, ये गिलगित का जो ये ब्रिज है, इट इज़ लोकेटेड ओवर देयर.
And this bridge is basically built over a very fast flowing Gilgit River. So a lot of people go there because ek to bazaar se guzar ke bhi hai uska rasta, so you get to buy all the souvenirs, all the things that you require, and then you get to see the beauty. You get to see how the beautifully flowing river. It's such a mesmerizing view. It's so peaceful. फिर हमारे पास है कारगा बुधा. Sorry if I'm not pronouncing it right, but it's basically a rock जिसके ऊपर बुधा का जो स्ट्रक्चर है उसको इनग्रेव किया गया है, और ये कहा जाता है कि 7th century से वहाँ है. इट हैज़ बिन बिल्ट इन द 7th century and it's a super old place, so a lot of tourists go there, they take pictures. Then we have the monument of Taj Mahal. ये built हुआ था over a victory, so it's a victory monument which was built around 700 years ago, so it's a pretty old thing. Then we have शेर किला. एक ऐसा एरिया है जहाँ हमारे पास स्पेसिफिकली there's a beautiful lake जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ ट्राउट फिशिंग की जाती है. लोकल्स भी उसे एंजॉय करते हैं, इंटरनेशनल्स भी जाते हैं, सो इट्स अनदर प्लेस दैट इज़ वर्थ अ विजिट. फिर हमारे पास है नलतर वैली, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है. बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट, जब गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया जाए तो नलतर वैली तो ज़रूर लोग अपने लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस भी हैं, प्राइवेट होटल्स भी आपको मिलेंगे. फिर वहाँ जो लश ग्रीन उनका एल्पाइन फॉरेस्ट है, उसके करीब लेक्स हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, फ़िशिंग करने जाते हैं. उसके अलावा वहाँ बहुत सारी ग्लेशियर्स भी हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर्स. सो इट्स अनदर ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स जस्ट दैट कि पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम लोग इतना हाईलाइट नहीं करते, बट इट्स हाई टाइम कि हम लोग अपनी ही टूरिज़म को प्रमोट करें, अपनी टूरिज़म के बारे में बातचीत करें. और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये है कि K2 चैनल पाकिस्तान का पहला ऐसा चैनल है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इन तमाम एरियाज़ को कवर करता है. सो देयर आर सो मेनी शोज़ ऑन K2 चैनल जो कि स्पेसिफ़िकली गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी होते हैं. उसमें उसके हवाले से बातचीत की जाती है. अब हम चलते हैं, हमारे साथ जो गेस्ट हैं ऑनलाइन जो हमें ज्वाइन करेंगे वो वेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन पहले करा देती हूँ. हिज नेम इज़ डेविड जेम्स एंड ही इज़ एन ऑथर ऑफ अ बुक विच इज़ कॉल्ड Traveling Purposefully Towards a Vague Destination. So he's currently traveling in Pakistan with his friend Casper, who is from the Netherlands, and they want to make a documentary about Pakistan, जिसमें वो लोग पाकिस्तान की खूबसूरती, उसके heritage sites, उसके बहुत सारे languages, जितने भी cultures हैं, traditions हैं, उन सबको cover up करना चाहते हैं. They want to show it to the world that how incredible of a country Pakistan is. तो चलिए पहले हम उनके काम पे एक छोटा सा पैकेज देख लेते हैं. Hello, David. How are you? Hi, Rita. I'm pretty nice to finally get to talk to you. It's a pleasure to have you. Thank you so much that you took out the time and that you joined us here tonight. Yeah, and thank you K2 team for inviting me on the show. It's pretty exciting. So David, all the viewers who are watching us, they are very excited to get to know you. So they want to know about your background. So tell us about yourself and tell us about how your journey as an adventurer started. Well, that's a pretty long story. I've always been a pretty individual. Kind of caught the travel bug pretty young when I was 16. And well. That's a pretty direct question. Okay, so I think that the real international traveling started about 3 years ago. I got pretty lucky and I met a sailor in Fort Lauderdale, Florida, and he was sailing up to New England on a 41-foot French sailing catamaran, which if you don't know what that is, it has one hull and two hulls. And that's what makes it a catamaran. It's 2 holes, more stable. And spent about 2.5-3 weeks at sea, and immediately I was like, well, this has got to be a seriously adventurous way to travel. And I did that for about 2 years, and bought a one-way ticket to Thailand a year and a half ago, and I just decided, no, I don't think I ever want to go back to sea. I think I want to keep traveling. Bopped around Southeast Asia a little bit, and ended up in India about 9 months later, and that's what kind of sparked my curiosity to come here and visit Pakistan. Oh wow, that is so fascinating. So David, we're so glad that you're here in Pakistan. How are you enjoying your stay so far? Honestly, it has been
been pretty surreal. I think that the pride of Pakistan, definitely its hospitality. Oh, okay. I'm glad to know that. I went through your Instagram and I saw your stories. So you've traveled quite a lot in Gilgit Baltistan. So what is your favorite thing about that place so far? So we made a lot of friends in a little tiny remote village called Shimshal. And the road getting out there is pretty long and very isolated. These guys are like really independent. Um, I mean, they built their own road in like I think it was 2002 or 2003. So that by itself is pretty exciting. To come out there, we met all these really interesting individuals, and I mean, it was just like it's just I don't even know where to begin. It was just like this crazy amount of hospitality. They actually spoke really, really good English. What we were surprised to find out was that this little tiny remote village that had been isolated less than 20 years ago when they finished their road. Uh, these guys were going out to college and university like Karachi and Islamabad, Lahore, and even a couple of them were in Gilgit. We were like staying in there, hanging out with their family, actually playing with the cats, Billy Bacha. I've been picking up a little bit of Urdu here for this trip. Maini Sikna Hey Urdu. Sorry. I hope that maybe impressed someone. That is so cute, and it's a pleasure to know that you're liking it here. David, tell us something about your stay. Any story that you'd like to share with us. How do you like the music of Gilgit Baltistan, the food? Very excited to know all about that. Well, the food is pretty nice. A whole lot of kebab. We've had where we're staying currently is Hollywood. Right now, we are in Karimabad because I don't want to say anything bad, but unfortunately, Hollywood does not have the greatest Wi-Fi or cellular service. So we had to hit like 30 minutes away to Karimabad. So it's been kind of a mission. Looking forward to this. There's this guy on our street. He's been making it like kebab. He's great. We come there literally, I think, almost every night. Yeah, the food's pretty good. It's not as spicy as like Lahore or Karachi. I'm sure that the farther south you go, it's going to be a lot more exciting. And well, I like spicy. I think maybe a lot of Americans don't like it, or especially. I'm here with my friend Casper. Right, he's Dutch. He's also my traveling partner. I met him in India, streets in Kolkata. Say hey, Casper. Hi, I'm for traveling doctor. I'm working here with David. Oh, hello. It's nice to meet you too. So Yeah, well, sorry, I didn't interrupt, Rita. no, I just wanted to say that in the end, what is the message that you'd like to give to the world about Pakistan? Since you know that the image of Pakistan in the international media has been pretty negative. So, what kind of role do you think you're playing to show the good part of Pakistan to the world? And what would you like to say to the people out there? Okay, well, Rita, yeah, I mean, you kind of said it yourself, But when I initially came out here, I made a lot of friends while I was actually traveling in India. I made a lot of friends on social media who were from Pakistan. All these guys just kept saying, "Oh, come here, come to Pakistan, come to Pakistan, Pakistan." I didn't really know too much about that. I personally, we do. Unfortunately, there is a negative perception of Pakistani people. So yeah, a couple of people have asked me, did you feel unsafe coming out here? Were you worried or this or that? I think that the easiest way to answer that question is what's probably a pretty difficult way to travel, or what's somewhere, if you were to travel in a place that you don't think is very safe, what are you going to do? What are you not going to do? Excuse me. You're not going to hitchhike. So we have been hitchhiking pretty much everywhere. We've been trying to hitchhike as much as physically possible. Kind of also show all of our Western friends, Western community that hey, this is Pakistan. It's not the news, it's not the media. It's pretty exciting here. There's a lot of adventure to be seen. You've got like the Himalayas, you've got the Karakoram, you've got Hindu Kush. I mean, this is I'm just talking about the north, because our entire mission here is that
I'm not sure if I explained this very well, my bio, but I'm a writer, and I'm the author of a book recently published, a novel called Traveling Purposefully Towards a Vague Destination. And I think that's a pretty good way to sum up my life. But yeah, I mean, COVID-19 has taught us a lot of different things. And, you know, it feels like the entire world is really upset. You know, it's really depressed. A lot of people have lost their jobs, lost a lot of money, you know, a lot of protests, a lot of violence happening in the United States. And, you know, I'm really, really blessed to be here in Pakistan, where I feel really safe. Coronavirus is really, really low, and there's not very many cases. You know, there's hardly any deaths. And it's just like, I cannot think of a better place in the world to be right now than Pakistan during a global pandemic. And I think it was about, I was at home, trapped with my family. Hi, Mom. And, you know, it's pretty depressed, man. I just decided, you know what? I've written a book, always wanted to come out. Might make like a proper documentary film. Me and my friend Casper have been talking about, we were traveling in India and Nepal. And we decided, hey, man, let's just go for it. Let's try it out. Let's go. Let's see how it happens. And we've been here 1 month, and we've got a couple of projects started up here in the north, and we're expecting to be in Pakistan for about 6 months. That's great to hear, David. Thank you so much for sharing your experience with us. You know, you've been very kind, and we absolutely appreciate the work that you and Casper are doing. Please keep on doing that, and do visit Peshawar as well. We'd be happy to have you here. We'd be happy to show you around our set and to show you around this beautiful city as well. So once again, thank you very much for joining us. It was a pleasure. Thank you, Rita. Shukri. Thank you, K2. I look forward to seeing you guys in Peshawar. Thank you, David. Take care. Bye-bye. तो ख़ातीन हज़रात, जैसा कि आपने देखा कि हमारी बातचीत हुई, सॉरी कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, क्योंकि अगेन ही इज़ इन द माउंटेन्स, तो इंटरनेट इश्यूज़ तो होते ही हैं, एक्सक्यूज़ यू नो अस फॉर दैट। लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे गेस्ट के साथ।